Hello students, I am Meghna Jain. Today we are going to cover a very interesting topic, that is probability. It is a topic of class 8. It is also introduced in 9th again. CBSE syllabus by Meghna Jain. So let's get started with the topic. What is actually probability? In probability, we are going to deal with all these things as you can see in the cover page, that is dice, coins, cards. We are going to calculate the probability of the given things. What is the probability of raining today? If it depends on the season actually. Probability raining की तो season पे depend करती है. अगर rainy season है तो probability ज़्यादा है rain होने की. अगर हम बोलते हैं अगर मान लो summers चल रहे हैं तो probability almost 10% है raining की. वो तो फिर भी सकती है अगर मान लो summers भी है तो we can also have rain in summers. So it depends. Probability अब देखिए इसमें हमारी प्रोबेबिलिटी अनसर्टेन है एक्चुअली हमें पता नहीं है इट डिपेंड्स ऑन टाइम इट डिपेंड्स ऑन सीजन इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस ठीक है अब देखिए इसमें आपके पास अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड और टेल आने की इक्वल प्रोबेबिलिटीज है इसकी भी 50% प्रोबेबिलिटी है और इसकी भी 50% प्रोबेबिलिटी है तो 50% probability उसको क्या कहेंगे probability equal it is shared by both मतलब it is probable that you get a head or you get a tail when you roll dice you what is the probability if you roll one die what is the probability of getting 7 on the die 7 तो dice पे होता ही नहीं है so it is impossible to get a 7 on the die so things like this we are going to do in this. Yes, students. Now, some important definitions we are going to study in this chapter, without which your knowledge of probability is incomplete. So, let us do the important definitions. First is experiment. What is an experiment? An activity which has well-defined result is an experiment. हम उसकी probability तभी calculate कर सकते हैं जब हमें उसके results, हमें उसके outcomes पता हो. हमें outcomes ही नहीं पता तो हम उसकी probability कैसे calculate करेंगे. हमने roll कर दिया die, but हमें ये नहीं पता उसमें क्या क्या आ सकता है तो हम उसकी probability कैसे calculate करें. हमें पता है कि जब हम एक die को roll करते हैं the only possibilities are of getting 1, 2, 3, 4 and 5 and 6. So we can calculate its probability. A trial. What is a trial? Trial is when we conduct the experiment once. Like if we are finding out the probability of getting 6. When we conduct the experiment, we roll the die. That is called as a trial. That is called as a trial. Random experiment. Random experiment is the one in which if we roll a die, there is equal possibility of getting all of the outputs like 1, 2, 3, 4, 5, 6. सबकी आने के chances सेम है सबके आने के चांसेस सेम है लाइक हम कॉइन टॉस करते हैं उसमें हेड और टेल के चांसेस दोनों के 50-50% है इवेंट व्हाट इज एन इवेंट if a die is thrown possible outcomes are 1 2 3 4 and 5 and 6 these possible outcomes of a trial are known as events they are called as events possible outcomes are called events. Sample space is
the one which includes all the possible outcomes. Like हम die roll करेंगे तो इसका क्या all the possible outcomes sample space क्या होगा इसका of getting 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is the sample space of rolling a die, experiment of rolling a die. Sure event. If we say that what is the probability of getting 1, 2, 3, 4, 5 and 6 on a die, we will say that is a sure event because एक डाई को रोल करेंगे तो इनमें से ही कोई ना कोई आउटकम होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have included all of them, so it is a sure event. It is a sure event कि इसकी जिस और जो sure event होता है उसकी probability 1 होती है. Probability is equal to 1. Probability is equal to 1. Impossible event. Let me give you an example of impossible event. Getting 0 on the die. Can we get 0 on the die? We don't have any outcome 0 on the die. So what is the possibility of getting 0 on a die? It is equal to 0. Possibility is 0. जब sure event होता है तो हम उसकी possibility को 1 लिखते हैं और जब वो impossible event होता है कि वो हो ही नहीं सकता उसकी probability को हम 0 लिखते हैं. उसकी probability को क्या लिखते हैं हम 0 लिखते हैं students. Are you clear? Can we move on? Probability of an event is number of favorable events divided by total number of events. Like, what is the probability of getting red hair? What is the probability of getting red hair? 2 favorable events then 1, 2. And what are the total number of outcomes we can get? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12. What is the probability of red on the disk is 2 by 12. What is the possibility of head? Probability of head is equal to what is the favorable event? Two choices. या हमारे पास head आएगा या tail आएगा. तो एक favorable event है divide by total number of outcomes. Total number of outcomes can be 2. So 2. Probability of drawing a red ball. Red ball की probability कितनी है? Let us calculate. Red balls कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 red balls. So favorable outcomes क्या है? 6. And what are the total outcomes? 10. क्योंकि 4 green balls हैं. So 10 is the total outcomes. So this is how you calculate probability of an event, of a given event. देखिए, let us see exercise 5.3. Question number 1. You can also do it. बेटा, you can take the examples. अगर आपको method समझ में आ गया है, you can do any question which is given to you. A box contains, can you see, 3 red balls and 5 white balls. 5 white balls. I'm marking it with blue. Okay. What is the probability of drawing a answer 1? Probability को हम P से denote करते हैं. A blue ball. What is the probability of a blue ball? I told you favorable outcomes. What is the method for calculation? Favorable outcomes.
by total outcomes. What is the favorable outcome? Favorable outcome is we have 3 blue balls. So 3 upon total number of balls are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 are total balls. So probability of a blue ball is number of blue balls actually by total number of balls. Similarly, probability of white ball is equal to number of white balls. It will be equal to number of white balls by total balls. Number of white balls are 5. Total number of balls are 8. So 5 by 8 is the probability of getting a white ball. So next, let us see the next question. The number 1 to 15 are written on the desk of 15 cards. One number on each card with no repetition, and the card are turned face down on the table. What is the probability of drawing a card number greater than 10, an even number and an odd number? So let's draw the cards. 1 to 15 cards थे हमारे पास. So let's draw the cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. अगर हम इनको फेस डाउन से रख दें तो देयर इज इक्वल चांसेस ऑफ ड्रॉइंग एनी कार्ड. हमें तो नहीं पता ना उसके पीछे कौन सा नंबर मेंशन्ड है. सो देयर इज इक्वल चांसेस ऑफ ड्रॉइंग ऑल द कार्ड्स. अब आप देखिए हमारे पास क्या है. Probability of number greater than 10. Probability of drawing a card with number greater than 10. Number greater than 10 कितने कार्ड्स पर है? Have a look. Number greater than 10 कितने कार्ड्स पर है? ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5. So possibility of number greater than 10 cards with number greater than 10 divide by total cards. What is the possibility? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cards में number है greater than 10 और total cards कितने हैं? 15. What is the total number of cards? Total number of cards are 15. So we'll write 15 in the bottom. What about the second part? An even number और उसके बाद हमने बताना है an odd number. Probability of a card of, ये आपका A part है, ये B part है.
probability of even number कार्ड, even number की probability क्या है? ये देखिए even number की, ये देखिए even numbers कौन से हैं? Even is multiple of 2, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 cards with even number. Total 15 cards हैं. So 7 cards with even number, cards with even number divide by total cards. So cards with even number are 7. 7 divided by 15. अगर 7 cards even है तो what is the probability of an odd card? Probability of an odd card. What is the probability of odd card? Card with odd numbers divide by total cards. Odd number वाले cards कितने? 8 divide by 15. So your probability is 8 divided by 15. Is it clear, students? Can we proceed to the next question now? I'm giving you 1 minute to just see the question so that we can proceed to the next question. Okay. Now, coming to the next question. A bag contains 4 black, 3 white and 7 red cards. So let us draw. क्योंकि हमें ड्रॉ करना अच्छा लगता है, वी लाइक टू ड्रॉ द कार्ड्स. ब्लैक कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 4. वी हैव 4 ब्लैक कार्ड्स. 1, 2, 3, 4 black cards are there. Then 3 white cards. व्हाइट कार्ड्स को हम ऐसे ही रहने देते हैं, बस इसकी आउटलाइनिंग कर देते हैं. व्हाइट कार्ड्स, 3 white cards and 7 red cards. 7 red cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. We have 7 red cards. So now you can do the question fast. मेरी भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स आपको. You can calculate the probabilities fast. Let us see probability of red card. Probability of red card. What is the probability of red card? Number of red cards. Red cards by total cards. What is the number of red cards? Red cards are 7 by total number of cards. Total number of cards 4 plus 3, 7 plus 7, 14. So total number of cards are 14. What is the probability of black card?
What is the probability of black card? 4 black cards are there. 4 out of 14 is the probability of black cards. आप ऊपर क्या लिखेंगे? Number of black cards divided by total cards. Now, what is the probability of getting a black or a white और white card? और का मतलब क्या होता है? या black आ सकता है या white आ सकता है. So can you see black और white cards कितने हैं? 7 है black and white cards. तो 7 upon 14. आप लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लैक और व्हाइट कार्ड्स बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स. अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आपका सी पार्ट था. प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कार्ड. व्हाइट कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 अपॉन 14. व्हाइट कार्ड की प्रोबेबिलिटी है 3 अपॉन 14. So let us calculate. One part is left. Black or a white card. Black or a white card we have done. Red or a white card is left. Probability of getting a red or a white card is equal to number of red and white cards. देखिए number of red and white cards कितने हैं? Red and white cards. Red and white cards 7 plus 3 10. So 10 is the favorable outcome. Divided by total outcomes is 14. With this we complete our third question. We coming to the fourth question. About bowl contains cards from 1 to 25. A card is drawn at random. What is the probability that the card drawn is even, odd, composite number, prime number, a number greater than 16, a number less than 12? Now we can also do it orally. देखिए 1 to 25 में even numbers क्या होंगे? Probability of answer 4. Probability of even number on that. What is the probability event of getting a number? Even number. Even numbers कहाँ से start होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 and 24. So we have 12 even numbers. So 12 divided by 25. That is the probability of even number. अगर even number 12 है तो odd numbers कितने होंगे? What is the probability of odd number? Probability of getting an odd number is 13, क्योंकि अगर 12 even numbers हैं तो 13 odd numbers हैं, by 25. Probability of composite number, probability of prime number. So let us calculate probability of prime number first. Probability of prime number. आपको याद है prime numbers क्या होते हैं? जिनके कोई भी फैक्टर नहीं होता other than the number itself and 1. तो देखिए आपका 1 is not prime nor composite, तो 1 prime नहीं, तो 2 is prime, 3 is prime, 4 is composite, 5 is prime, 6 is composite, 7 is prime, 8, 9 is prime, 9 is not prime, 10 is not prime, 11 is prime, 13 is prime, then we have 14, 15,
दे ऑल आर कॉम्पोजिट, क्योंकि उनके और भी फैक्टर्स होते हैं, वो 3 की टेबल में भी आते हैं, 14 7 की टेबल में आता है. सो लाइक दिस 16 भी कॉम्पोजिट है, 17 is prime, 19 is prime, 21 is composite, 22 is composite, 23 is prime. That's it. 23 is prime. So we have these prime numbers from 1 to 25. They are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 prime numbers. So 9 upon 25. What is the possibility of composite number? जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं, यू ऑलरेडी नो दिस. बट 1 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है. तो लेट अस एक्सक्लूड 10 नंबर्स. 15 नंबर्स हम कह सकते हैं कि पूरा कंपोजिट है, क्योंकि 9 प्राइम है और उसके में प्लस 1 भी इंक्लूड, 1 भी एक्सक्लूड हो गया. तो 25 minus 10 is 15. 15 numbers are composite. So students, these are composite numbers, and the last part is last two parts are left. A number greater than 16, a number less than 12. Probability of number greater than 16. लेकिन नंबर ग्रेटर देन 16 कौन कौन से होंगे? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So there are 9 numbers if you calculate on your fingers. 9 upon 25. Probability of number less than 12. Probability of number less than 12. Number less than 12 कितने होंगे बेटा? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. So there are 11 numbers which are less than 12. If you count them on your, ये तो आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा. So divide by 25. So now we have solved this question also. Now moving on, a bowl contains cards जिन पे ये लिखा हुआ है AEBACAEAAD card. What is the probability that the card drawn has alphabet A? So probability of a card with alphabet A written on it is, देखिए A कितने कार्ड्स पर लिखा हुआ है. Let us count the number of cards where A is written. 1, 2, 3, 4. So number of cards with A, आप क्या लिखेंगे? Number of cards with A by total cards. Number of cards with A are 4. Divide by total cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So total cards are 9. Number of cards with A written on it divided by total number of cards, that is 9. So next is probability card with alphabet
बी रिटन। अल्फाबेट बी वाले कार्ड्स कितने? देखिए बी वाले हैं 1, only one card is with alphabet B written. So number of cards with B divided by total cards, that is 1/9. Probability of card with alphabet C. Card with alphabet C. Can you see alphabet C के कितने cards हैं? Only one is there. So again 1/9. Then probability of card with A or D. Card with A और D, मतलब A भी हो सकता है उस पे और D भी हो सकता है। A कितने कार्ड्स पर है? 1 2 3 4 5, 5 कार्ड्स पर A और D है। 5/9. This is the probability question we have done. Now moving on to the next question. I hope you are finding it very easy because this topic is really easy and really interesting. So let's move on. List the outcomes when you toss a coin. अब अगर आप एक कॉइन को टॉस करेंगे अ कॉइन, तो आपके पास क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? यू विल गेट अ हेड और अ टेल, यस और नो? वेरी सिंपल। अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास या हेड आएगा या टेल आएगा। सो विल राइट लाइक दिस। ये हम सैंपल स्पेस के लिए लिखते हैं। क्या क्या आ सकता है? 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो देखिए 1 2 कॉइन्स हैं, आपके पास किस वे में आ सकते हैं? एक पे हेड आ सकता है, एक पे टेल आ सकता है, एक पे टेल आ सकता है, एक पे हेड आ सकता है, दोनों में हेड आ सकता है और दोनों में टेल आ सकता है। तो यही हम लिखने वाले हैं। हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, ये दोनों पे हेड हेड है, एक पे हेड है एक पे टेल है, मतलब फर्स्ट पे हेड है सेकंड पे टेल है। वी कैन ऑल्सो गेट एक पे फर्स्ट पे टेल है और सेकंड पे हेड है। थर्ड इज दोनों में टेल है, कैन ऑल्सो गेट लाइक दिस। इसके अलावा कोई और पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है? नो, there is no other possible situation. So this is the sample space for tossing 2 coins. C part, 3 coins, अगर हम 3 coins को टॉस करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं? ये देखिए इट्स वेरी सिंपल। अगर आप 3 coins को टॉस करेंगे, जैसे आपने इसमें देखा 2 raised to the power 2 आया, ये 2 raised to the power 1 आया। अब इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? 2 raised to the power 3, दैट इज 8 आउटकम्स होंगे। कितने होंगे? 8 आउटकम्स। दैट दिस इज द ट्रिक ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। देखिए इसमें 2 पॉइंट। Students, as I told you, if we toss one coin, the outcomes are 2 raised to the power 1. That is 2 outcomes, that is head and tail. If we toss the coin, 2 coins, the outcomes are 4. 2 raised to the power 2 is 4. If we toss 3 coins, then number of outcomes are 2 raised to the power 3, that is 8 outcomes. अब 8 आउटकम्स को हम लिखेंगे कैसे? हमें कैसे पता कि कैसे आउटकम्स लिखेंगे? देखिए हेड और टेल, पहले इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स हेड और टेल लिख लेते हैं। हेड 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 हेड,
टेल 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 टेल। इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से। देन अगेन हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल। देन हेड टेल का सीक्वेंस लेते हैं। हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। देखिए इनमें से कोई भी आउटकम मैच नहीं होगा। ये 8 डिफरेंट आउटकम्स। दैट इज हाउ वी कैन राइट द आउटकम्स। पहले आप हेड हेड 4 टाइम्स लिखेंगे, हेड टेल 4 टाइम्स, फिर 2 times head 2 times tail, then head tail head tail head tail. You will get the 8 outcomes, required outcomes. Okay. When a dice is thrown, question number 7 says, when a dice is thrown, list the outcomes, find the possibility of getting an even number. A dice is thrown, तो हमारे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये 6 आउटकम्स पॉसिबल है। तो possibility of getting a even number, ये हमें निकालना है। possibility of getting even number कब कब आएगा हमारा? देखिए इनमें से even number की possibility क्या है? 2 4 6। तो 3 है, 3 possible events है जिसमें even number आ सकता है। so number is even total outcomes। इवन नंबर कितनों में आ सकते हैं? 3 out of 6 में इवन नंबर आ सकता है। Let us see prime number, getting a prime number. Let us calculate the prime number. Probability of prime number. Let us mark the prime numbers with blue. Prime numbers कौन कौन से होते हैं बेटा? 1 is neither prime nor composite, आपको भी बताया था मैंने। 2 3 5 ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। so 3 out of 6, टोटल आउटकम 6 है। सी पार्ट है आपका गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4 कब कब आएगा बेटा? 5 और 6। यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4, दैट इज 5 और 6। तो 2 टाइम 2 है आउट ऑफ 6। नंबर ग्रेटर देन 4 2 टाइम्स आ सकता है, 5 और 6 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट इज 6। फ्रॉम अ वेल शेफर्ड deck of 52 cards, have you played cards? Cards आपको पता होंगे, ताश के पत्ते। What is the probability of getting an ace? आप देखिए कार्ड्स में आपके पास 4 साइंस होते हैं। अगर मैं ब्रीफली आपको कार्ड्स के बारे में बताऊं तो 4 साइंस होते हैं। This is another sign, ये एक और साइन है, और एक होता है समथिंग लाइक दिस, ये एक और साइन होता है। ये देखिए 4 साइंस होते हैं। ये होता है रेड कलर्ड कार्ड्स और ये होते हैं ब्लैक कलर कार्ड्स, और सब में ये होता है ए, इसको इक्का कहते हैं, इक्का कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आपके पास ऐसे कार्ड्स होते हैं। इसको 11 को हम कहते हैं ये जोकर
ये J से डिनोटेड होता है, ये K से डिनोटेड होता है और इसको Q से डिनोटेड। तो देखिए ये सब हमारे पास 14 कार्ड्स होते हैं। 14 इस वाले सिंबल के कार्ड होते हैं, 14 14 14। तो टोटल कितने हो गए? 14 इंटू 4। बेटा देखिए हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं बेसिकली। इक्का इज ए ओनली, दिस इज इक्का, ठीक है, दिस इज वन ओनली। तो 13 कार्ड्स होते हैं, 13 इंटू 4 इज 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स हो गए। गेटिंग एन एस, एस मतलब इक्का, इक्के की क्या पॉसिबिलिटी है? इक्का हर साइन का एक एक होता है, तो 4 पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। टोटल कार्ड्स 52 है और मैंने आपको बताया इन सब सिंबल्स में हर कार्ड अवेलेबल होता है। तो एक 4 कार्ड्स में एस होगा डिवाइड बाय 52, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। देखिए 13 कार्ड जिस सिंबल के होते हैं और 13 कार्ड जिस सिंबल के होते हैं, तो 13 प्लस 13 26 कार्ड्स, और ये सारे ब्लैक कार्ड्स होते हैं आउट ऑफ टोटल, दैट इज 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन, एक डेक ऑफ कार्ड्स में 4 क्वीन है, 2 रेड है और 2 ब्लैक है, तो 2 ही रेड है, ब्लैक 2 रेड है 2 ब्लैक है, तो ब्लैक क्वीन की क्या पॉसिबिलिटी है? 2 बाय 52। कार्ड ऑफ क्लब्स, क्लब इनमें से ही किसी के सिंबल को कहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब इज 13 कार्ड्स होते हैं हर एक सिंबल के डिवाइड बाय 52। That is the end of the chapter. I hope you enjoyed the video. Please like, share and subscribe the channel. Thanks a lot for watching the video. Stay tuned for more videos.